गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल. कैसे हो? फाइन आफ्टर लॉन्ग टाइम. यस, चलो, शैल आई प्रोसीड? वॉल्यूम बन रहा है ना? शैल वी प्रोसीड? यस, ओके. We'll start with very big chapter, amalgamation, absorption and external reconstruction. And this we are going to learn in accordance with AS14. Correct? Big chapter, minimum one question we will expect. Around 14 marks, one question. If two questions will come, then it would be around 20 marks. Correct? So 14 plus 6, 14 plus 8, it can be any combination. But 14 marks sure short question I am expecting from this chapter as per the past trend, of ICAI. Agreed? Okay. If you will check the name of AS14, the name of AS14 is accounting for amalgamation. Correct? And then it is clearly stated in that amalgamation includes absorption. Amalgamation includes absorption. However, external reconstruction is not included in AS14. Then why external reco is covered in this chapter? That would be the question. Because the accounting of external reconstruction is similar to absorption. That is why external reco is covered in this particular chapter. Clear till this? Yeah? Okay. इस साथ में ही लिखना है. Write down. We will have theory. Maybe we have long theory here. Theory will be very important. If you will rectify that theory, then question solving will become very easy. Agree? Yeah? Shall I proceed? See, by reading the name of the chapter, few questions will arise in your mind. First one is, what is amalgamation? What is absorption? What is external reconstruction? Correct? That would be our first question. Second question, sir, ये क्यों करना है? So, basic answer is exam में आने वाला है. So, we have to do it. Correct? So, exam oriented, 14-20 marks question would be expected. Hence, we have to do it. And last but not least, sir, we are highly interested in third question. Sir, solve कैसे करना है? How to solve this and how to get maximum marks in this chapter, that we are going to learn. The important part is, it is company related topic. So you should know schedule 3 balance sheet. I hope you all rectified that at appropriate time. Correct? The balance sheet आपको आता है. And we will have pure accounting. It would be ledger and journal. But for accounting, we should understand the basic part of the chapter, background of the chapter, and certain important calculations. If you know that calculations properly, then your final answer would be correct and you will get maximum marks. Otherwise, they may give you 0, because important calculation would be purchase consideration. So purchase consideration is wrong, maximum part of the question would be wrong. Agreed? Yeah? Chalo, start करें. What do you mean by amalgamation? So my first point of discussion, what? Or I can say, right, meaning. बोलो, what is amalgamation? सुना है आप लोग ने कभी? क्या होता है? Company related है, correct? Amalgamation can be of two firms, it can be of two companies, correct?
So here we have amalgamation of companies. What do you mean by amalgamation? क्या रहेगा? They merge. Okay. What is your opinion? No? Aryan? New company will acquire old company. Okay. Real, any opinion? No? Okay. What do you mean by amalgamation? I can say when two or more existing companies will go into liquidation. Two or more existing companies will go into liquidation and one new company is formed to take over their businesses is called as amalgamation. Pure example is Vodafone Limited, Idea Limited, both got amalgamated and formed a new company VI, that is Vodafone Idea Limited. आज मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में इफ यू विल चेक it is a VI, Vodafone Idea Limited name is there in stock market, not Vodafone Limited and Idea Limited. So it is pure sheer example of what? Amalgamation. So though existing company बंद होगा, literally they will go into liquidation. On paper they will go into liquidation, correct? And one new company will take over. One new company will take over their businesses is called as amalgamation, correct? So my first point of discussion, what is amalgamation? Write down when two or more existing companies go into liquidation. And one new company is formed to take over their businesses. Take over their businesses. क्या लिखा? When two or more existing company will go into liquidation, मतलब बंद हो जाएंगे, and one new company is incorporated or formed to take over their businesses. This is known as, लिखो आगे, is known as amalgamation. X Limited is which company? It is the existing company. Y Limited is another existing company. Both will go into liquidation. And one new company, XY Limited, XY Limited is formed to take over their businesses. क्या टेक ओवर करेंगे? XY लिमिटेड क्या टेक ओवर करेंगे? बिजनेस मतलब assets and liabilities. So
Two existing companies will go into liquidation and one new company is formed. ये कंपनी को हम क्या बोलेंगे? Selling company. This company is known as purchasing company. This company is amalgamating company. This company is amalgamated company. This company is known as vendor company. This company is called as Vendy company. Clear? We call it as selling company and purchasing company. Simple language we will use. Done? You understood the meaning of amalgamation? Correct? Now we have to do accounting in the books of selling company. So दोनों selling company के book में accounting आएगा. And we have to do accounting in the books of purchasing company. तो purchasing company का भी accounting आएगा. As far as AS14 is concerned, AS14 talks about accounting in the books of purchasing company only. Clear? Selling company का accounting कैसे करने का we'll talk about it. Anyways, we'll talk about second concept. Second concept is absorption. First is amalgamation, then we will learn absorption. What do you mean by word absorption? Aryan? Why compulsory? Firm or company? But is it compulsory? Absorption. Absorption means takeover. Absorption means takeover. Correct? One company will take over the business of another company is called as absorption. I would say X Limited is existing company. We can say Y Limited is another existing company. One existing company will be taken over by another existing company. Correct? This is called as absorption. Here Y Limited is purchasing company, X Limited is selling company. You can say vendor company, Vendy company. Clear? Write one statement here. When one existing company is being
taken over by another existing company. Then it is termed as absorption. Done? Sure. Did you observe one thing? Amalgamation में two selling companies, one purchasing. Absorption में one selling, one purchasing. तो अकाउंटिंग किसका इजी रहेगा? एब्जॉर्प्शन. तो पहले few questions we will solve based on absorption, where one purchasing and one selling company, and then we will go for amalgamation. Correct? Third one. What is next? External reconstruction. There are two types of reconstruction. One is internal reconstruction, other is external reconstruction. Both are there in our syllabus. First one, I think so, internal you have already learned. We'll talk about external reconstruction. Now what will happen under external reconstruction? X Limited is existing company which will go into liquidation, and Y Limited, one new company is formed to take over their businesses or its businesses. This company is called as purchasing company. You can see the equation or diagram of external reco is similar to what? Absorption. So accounting will also be similar, and that is why external reco is kept in this chapter, but AS14 is not applicable to external reconstruction. Done? Okay, एक statement लिखो इसमें. Okay, when reconstruction word is used, you know, when company is loss making, then and only then reconstruction is required. Loss making, or I can say anticipated loss making. If you feel company is going to make huge losses, so you may start reconstruction from the beginning or before that. Correct? So for loss making companies, reconstruction is possible. You can say when you will go for reconstruction of building. If that building is old building, or maybe I can say delicate building, then in that scenario you can go for reconstruction. Correct? Likewise in companies, when you can go for reconstruction, when companies financials are not positives, their performance is not good, financials are not positive, and you want to run the company, then you can either go for internal reconstruction. Under internal reconstruction, same company will be continued, name will remain same. If Bad Luck Limited, after internal reco also it is Bad Luck Limited, but under external reconstruction, external name of the company will change. Earlier if it is Bad Luck Limited, now it will become Good Luck Limited.
पता नहीं, तेरे को देखने का ना, इधर तो मुझे नहीं पता, देख ले तू। पानी भी दे दे, पानी भी नहीं रखा है। नहीं आ रहा है, आवाज आ रहा है अभी? हाँ आ रहा है। ठीक है। हाँ बोलो। टू, yes, to get the benefit of economies, वो मार्केट शेयर आ गया ना, टू गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझता है? yes, cpu will get decreased, correct? We can bargain with the supplier, correct? We can bargain with the laborers, or we can bargain with the contractors, because if we will give order in quantity we can get better price. अल्टीमेटली क्यों होता है ये? अल्टीमेट टारगेट क्या है अमालगमेशन का? व्हाट इज द अल्टीमेट टारगेट? अल्टीमेटली टू गेट synergy. Have you heard about word synergy? Synergy सुना है? Yeah, synergy is, synergy is, I can say it is systematic energy in a particular direction. If two companies will come together, earlier turnover of one company was 100 crore, other company was 80 crore. If both the companies will come together, their turnover should be more than 180 crore. No. And why their turnover will be more than 180 crore? Because they both came together, so they will get the benefit of systematic energy in particular direction. Their workforce will play, or they will play big role in one direction only. They will get benefit, their revenue will increase, their turnover will increase more than 180 crore. So 1 plus 1 is more than 2. It is the effect of synergy. चल आ हम साथ चलें, let us do business together, we will grow together. That is synergy. Do you agree with this? पक्का? कुछ समझा? मेन ये है, ये जो ऊपर के तीनों रीजन थे ना, वो तीनों रीजन में इंपॉर्टेंट इज व्हाट, ये तीनों रीजन की वजह से सिनर्जी मिलना चाहिए। डन एवरीबॉडी? चलो, नाउ वी विल गो फॉर कि सर करना क्या है। बैकग्राउंड we understood, meaning we understood, purpose we understood. Now what would be the required part of the chapter? How to solve this chapter? थियरी थोड़ा ज़्यादा है, आई होप यू कैन बेयर, बट वो बाय हार्ट हो जाएगा। अभी जो बाय हार्ट करने बोल रहा हूँ, बाय हार्ट करने का, मेरे साथ बाय हार्ट करने का, देन यू कैन मैनेज दिस चैप्टर इजीली। Shall we start? See, in this chapter, there are three required parts. Three required parts, and they will ask questions based on only these three required parts. इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता, correct? First required part would be determination. Determination of what?
purchase consideration, PC. Correct? Second, accounting in the books of selling company. इसका होमवर्क साथ में ही करना, जो होमवर्क दूंगा ना साथ में कंप्लीट करना. आज कोई होमवर्क नहीं रहेगा, आज सिर्फ थियरी बैठ करके आना. नेक्स्ट लेक्चर, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज कल बड़ा लेक्चर है तो बहुत कुछ कल कवर हो जाएगा. करेक्ट? आज मैक्सिमम थियरी होगा, मे बी क्वेश्चन नंबर 1 या 2 का एक पीसी कैलकुलेशन तक होगा या लेक्चर होएगा, यू नेवर. कि कितना तुम बाय हार्ट करता है उसके ऊपर है. थर्ड, अकाउंटिंग in the books of purchasing. So PC calculate करेंगे, then selling companies books and then purchasing companies books. AS14 में क्या दिया है? AS14 में नहीं, AS14 में पीसी का बात की, AS14 में परचेसिंग कंपनी का बात की. AS14 इज नॉट टॉकिंग अबाउट सेलिंग कंपनीज अकाउंटिंग. तो सर फिर ये सेलिंग कंपनी का अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं? इट इज लाइक यू शुड नो द अकाउंटिंग ऑफ क्लोजिंग डाउन द बिजनेस. तो इसका अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड अकाउंटिंग रहेगा. परचेसिंग कंपनी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड अकाउंटिंग रहेगा, दैट इज AS14 बेस्ड अकाउंटिंग. सो सेलिंग कंपनीज अकाउंटिंग विल बी विच अकाउंटिंग? ऑब्जेक्टिव बेस्ड अकाउंटिंग. और कैसा है मालूम है? फ्रेंकली स्पीकिंग, पीपल आर अफ्रेड ऑफ दिस चैप्टर. रीजन इज आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन दे कैन नॉट कम टू नो सर स्टार्ट कहां से करने का. क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक दैट के सीक्वेंस में 5 इन्फो दिया है या 6 इन्फो दिया है तो एक एक पढ़ो और जर्नल करो या एक एक पढ़ो या लेक्चर पोस्टिंग करो, ऐसा नहीं रहे. यू शुड फॉलो सर्टन स्टेप्स एंड फॉर दैट स्टेप्स यू शुड रट्टो बाय थियरी. सो ये स्टेप बेस्ड चैप्टर है. करेक्ट? ओके, आगे बढ़े हम लोग. विल स्टार्ट विथ परचेज कंसिडरेशन. पीसी पे डिस्कशन करना है विच विल रिक्वायर अराउंड 15-20 मिनट्स मे बी. करेक्ट? व्हाट डू यू मीन बाय परचेज कंसिडरेशन? बोलो क्या रहेगा पीसी? सोचो ना. परचेज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. करेक्ट? व्हाट इज इन रिटर्न? मीन्स व्हाट वी विल परचेज एंड व्हाट वी विल पे. वी विल परचेज अ कंपनी and we will pay consideration against that particular purchase. That is called as purchase consideration. You know, since childhood of commerce, that is from 11th standard, you had already learned how to do accounting of purchase and sale of goods, purchase and sale of fixed asset, purchase and sale of investments. But now here we are learning what, purchase and sale of business. This chapter is talking about buying and selling of business. पूरा कंपनी खरीद रहे हैं, उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, that we are going to learn. And that is why the weightage of chapter is very high. And big chapter, around 25-30 problems we will have. Correct?
सो परचेज पूरा पूरा टॉपिक इसके ऊपर है। पीसी पीसी करेक्ट ना, मेच्योरिटी पार्ट करेक्ट, आगे का तो मैं रट्टा मरवा लूंगा अभी का अभी, बट पीसी पूरा करेक्ट होना चाहिए। पीसी में ज़्यादा रट्टा नहीं मार पाएंगे, वो क्वेश्चन रीड करके डिसाइड होगा कि ये पीसी का कौन सा मेथड है और कैसे कैलकुलेट करें। इसका मैं आपको एक बैकग्राउंड दे सकता हूँ। थियरी आई विल कवर मे बी, और मे बी हाफ एन आवर में बात करेगा इस पे। ये रॉन्ग होता है तो बहुत कुछ रॉन्ग हो जाएगा, देन यू डोंट एक्सपेक्ट कि कुछ मार्क्स देंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट सब जगह पे आएगा। करेक्ट या? चलो डेफिनेशन दिया है परचेज कंसिडरेशन का। व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन? एनी पेमेंट मेड बाय परचेसिंग कंपनी to the shareholders of selling company is known as purchase consideration. Let us take one example. यहाँ पे I can say सम्राट होटल है नीचे, या सम्राट होटल को हम टेक ओवर कर दें, तो हमने वो बिजनेस खरीदा, कुछ पे करेंगे, करेक्ट? जो भी पे करेंगे किसको पे करेंगे? ओनर्स को। शेयर होल्डर्स यहाँ पे कंपनी है, वो प्रोप्राइटर रहेगा, मे बी ओनर्स को पे करेंगे। क्या पे करेंगे, कैसे पे करेंगे? हाँ मतलब कैसे, इन विच मोड, इट कैन बी एनी मोड, करेक्ट? जैसे पे करना है पे कर सकते हैं। सो एनी पेमेंट मतलब एनी मोड कैन बी पेड। किसको? शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी। कौन पे करेगा? परचेसिंग कंपनी पे करेगा। सो एनी पेमेंट मेड बाय परचेसिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी इज नोन एज व्हाट? परचेज कंसिडरेशन। क्लियर? एनी पेमेंट इज अलाउड। इन अदर वर्ड्स, पेमेंट मेड टू द डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ सेलिंग कंपनी विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी। मैंने कंपनी खरीदा, उसके शेयर होल्डर को जो मैं पे करूंगा दैट इज पीसी, बट उसके शेयर होल्डर, मैंने कंपनी खरीदा, तो मैंने क्या खरीदा, क्या टेक ओवर किया? एसेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या आया रहेगा मेरे पास? क्रेडिटर्स ना। शेयर कैपिटल कैसे लेंगे? ओनर है वो लोग, ओनर को बुक में थोड़ी लेंगे। शेयर कैपिटल थोड़ी कुछ होता है बेटा, शेयर कैपिटल तो वो लोग, शेयर होल्डर के पास जो कैपिटल है उसका पेमेंट मैं करेगा ना, पर वो मैं लेगा थोड़ी बुक में। बुक में तो आई विल टेक ओवर एसेट्स एंड आउटसाइडर्स लायबिलिटी। ओनर का लायबिलिटी बुक में लेके क्या करेगा? करेक्ट? ओनर को तो पे करेगा और बोलेगा भाई जाओ तुम लोग, अभी मेरा कंपनी। सो आई विल टेक ओवर व्हाट? एसेट्स एंड आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। आउटसाइडर्स लायबिलिटीज में डिबेंचर टेक ओवर करेगा, क्रेडिटर्स टेक ओवर करेगा, करेक्ट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टेक ओवर करेगा। ये टेक ओवर करके हम क्या करेंगे? पे करेंगे, कभी ना कभी तो पे करना ही पड़ेगा, करेक्ट? तो मैंने डिबेंचर होल्डर को पे किया। मैं कौन है? परचेसिंग कंपनी। मैंने डिबेंचर होल्डर टेक ओवर किया और डिबेंचर होल्डर को पे किया। ये पीसी में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? पीसी का डेफिनेशन क्या है? एनी पेमेंट मेड टू द shareholders of selling company. So any payment made to the creditors and debenture holders or outsiders liabilities of selling company will not form part of PC. बराबर है या? बट उनको पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बुक्स में लेने का फिर पे करने का। इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी। अग्रीड? पक्का? तो बुक में क्या नहीं लेंगे? शेयर होल्डर्स फंड को हम, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स मतलब शेयर होल्डर्स फंड को हम टेक ओवर नहीं करेंगे, बिकॉज वो हमें पे करना है। डू यू अग्री विद दिस? ओके। कैन वी मेक पेमेंट बाय डिबेंचर्स? पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी, but can I make payment through debentures? That is a part of PC. पेमेंट कोई भी मोड से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अग्रीड या? चलो लिखो, एनी पेमेंट मेड बाय
purchasing company to the shareholders of selling company. Any payment made by purchasing company to the shareholders of selling company is known as purchase consideration. Y Limited purchasing company has taken over assets and liabilities, that is business of X Limited, and now Y Limited, in front of this Y Limited will make payment this is known as what? Purchase consideration. Clear everybody? Draw clear here? ये पीसी में क्या आएगा? Any modes of payment. Next point लिखो. Any payment includes payment by shares, debentures, cash, or other asset. etc. क्लियर? हाँ, कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं. आगे एक लाइन छोड़ के लिखो. नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट मेड टू debenture holders and creditors. Payment made to debenture holders and creditors debenture holders or creditors of selling company will not form part of PC. बोल. क्या लिखा लास्ट? Any payment made to debenture holders or creditors of selling company will not form part of PC. Correct? Next line लिखो. If purchasing company will settle outsiders' liabilities of selling company,
outsiders liabilities of selling company. After taking it in own books, समझाइए. ओन मतलब परचेसिंग कंपनी खुद के बुक में लेगा फिर पे करेगा. डू यू अग्री विद दिस? ये क्या लिखा, वापस एक बार जरा रिपीट करो ना. या डन. ओके, आगे बढ़ते हैं. पीसी कैलकुलेट कैसे करने का, मेथड्स ऑफ पीसी. सब पीसी का ही डिस्कशन है, ध्यान से सुनने को. मेथड्स ऑफ परचेस कंसिडरेशन. करेक्ट. क्या था फर्स्ट? Net assets method and net payment method. What do you mean by net asset method? चलो सोचो जरा. परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है. लाइक सम्राट होटल, इफ वी आर टेकिंग ओवर, वी आर परचेसिंग, उसको कितना पेमेंट करेंगे? जो पे करेंगे वो पीसी है. तो हाउ टू डिटरमाइन दैट अमाउंट? बोलो, हाउ टू डिटरमाइन, क्या करें? मतलब नेट एसेट, that method is called as net asset method. Under net asset method, PC is equal to NATO. What is NATO? Net assets taken over. Don't say only net asset of सम्राट. जो टेक ओवर करेंगे उसका पेमेंट करेंगे. अभी सम्राट होटल वाला बोल रहा है कि मेरा 1 लाख का बैंक बैलेंस है, वो बैंक बैलेंस मैं खुद अपने पास रखने वाला हूँ, आपको नहीं देने वाला. तो वो हमने टेक ओवर नहीं किया है, तो उसका पेमेंट नहीं करेंगे. तो जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेक ओवर करेंगे उसका पेमेंट हम कर देंगे. दैट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विच आर टेकन ओवर, तो एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करेंगे, वी विल गेट नेट एसेट्स टेकन ओवर. Agreed? Okay. Tell me, सम्राट होटल का एसेट्स कैलकुलेट किया इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी, 10 करोड़ का एसेट आया. लाइबिलिटीज कैलकुलेट किया तो 2 करोड़ का लाइबिलिटीज आया. तो व्हाट इज नेट एसेट? 8 करोड़. अभी सोच समझ के बोलना, उसको 8 करोड़ दे देंगे तो वो मान जाएगा कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट डिमांड करेंगे. एक्स्ट्रा फॉर व्हाट? गुडविल. बराबर है? लॉजिकल. या तो ये जो नाटो है, इसमें गुडविल इंक्लूड रहना चाहिए, होना चाहिए, कि गुडविल इंक्लूड नहीं होना चाहिए? दिस नाटो इज इंक्लूडिंग गुडविल, एक्सक्लूडिंग. वॉट एवर इज नाटो, नेट एसेट टेकन ओवर जितना है उतना ही हम पे करने वाले. तो जो पे करने वाले हैं उसमें गुडविल भी पे करना है. गुडविल का अमाउंट पे करना है कि नहीं करना है? तो ये नाटो में गुडविल नेट एसेट टेकन ओवर, तो सारे एसेट्स का लिस्ट बनाऊंगा, माइनस लायबिलिटीज करूंगा. तो वो एसेट में गुडविल लेने का कि नहीं लेने का? लेने का कि नहीं लेने का? सो दिस नाटो इज व्हाट? इंक्लूडिंग गुडविल, बिकॉज मुझे गुडविल का पेमेंट करना है.
कौन सा वैल्यू रहेगा ये गुडविल का? ओके, ये नाटो में जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेक ओवर करेंगे, नेट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर है, उसमें एसेट्स लाइबिलिटीज विल बी टेकन ओवर एट व्हाट वैल्यू? बुक वैल्यू। उसने वो होटल मे बी 25 साल पहले खरीदा है, तो उसके बुक में तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रहेगा, तो वी विल परचेज दैट होटल एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसने तो ये होटल कितने में खरीदा है मालूम है? 50 लाख रुपए में लिया था 25 साल पहले, आज उसका भाव 9 करोड़ रुपए है, तो हमको कितने में बेचेगा? 25 लाख में। क्यों? 50 लाख को डेप्रिशिएट भी किया रहेगा ना, बुक में तो कम हो गया रहेगा। बुक वैल्यू पे टेक ओवर करेंगे कि मार्केट वैल्यू पे टेक ओवर करेंगे? लॉजिकली तो मार्केट वैल्यू पे होना चाहिए, करेक्ट। सो ये नाटो कैलकुलेट कैसे होगा? रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ on real assets taken over, we will not take over fictitious assets, minus क्लियर। कौन सा वैल्यू लेंगे हम लोग? रिवाइज्ड वैल्यू। एसेट के लिए वी कैन से मार्केट वैल्यू, एंड लाइबिलिटीज के लिए वी कैन से अग्रीड वैल्यू, करेक्ट, बट वी विल कॉल इट एज रिवाइज्ड वैल्यू। डन। नेट एसेट मेथड क्लियर। नाउ नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड में क्या होगा मालूम है? आई कैन से इट इज सिमिलर टू लमसम मेथड। पहले पेमेंट डिसाइड हो जाए एंड देन नेट एसेट विल बी कैलकुलेटेड, and then if there is a difference between payment and net asset, then that difference will be considered as either goodwill or capital reserve, correct? In this, PC is equal to what? क्या लिखा है? PC is equal to what? नेट पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, जो पे करेंगे शेयर होल्डर्स को, वो PC may or may not be equal to नाटो। ये जो नाटो है, ये नाटो में गुडविल नहीं रहेगा। This NATO is excluding goodwill. lump sum पेमेंट करके आ गए, एंड देन वी आर डिटरमाइनिंग कि अभी एसेट कौन से आए और क्या वैल्यूज है। यहाँ तक क्लियर? दिस नाटो इज एक्सक्लूडिंग गुडविल। नेट एसेट मेथड में नाटो इज इंक्लूडिंग गुडविल। ये गुडविल कौन सा वैल्यू का रहेगा बाय द वे? ये इंक्लूडिंग गुडविल है, कौन सा वैल्यू रहेगा? ओके, नेट एसेट टेकन ओवर जो लिखा है, पीसी इज इक्वल टू नेट एसेट टेकन ओवर। नेट एसेट टेकन ओवर में क्या क्या आएगा? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज रिवाइज्ड वैल्यू पे लेना है, उसमें गुडविल भी लेना है, तो गुडविल क्या वैल्यू पे रहेगा? रिवाइज्ड वैल्यू पे रहेगा। तो उसका रिवाइज्ड वैल्यू अगर नहीं दिया है तो बुक वैल्यू इज इक्वल टू रिवाइज्ड वैल्यू लेंगे, करेक्ट। एंड रिवाइज्ड वैल्यू कभी कभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो यू शुड नो फॉर दैट यू शुड नो हाउ टू वैल्यू गुडविल इन दिस पर्टिकुलर केस।
तो गुडविल वैल्यूएशन ऐसा बचपन में आई एम अज्यूमिंग सीख के आए रहेंगे. सिंपल एवरेज मेथड फाउंडेशन में था, 2-3 मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड, करेक्ट. देन एन्यूटी मेथड, ये सब आप सीख के आए रहेंगे. नहीं है तो हम वापस करेंगे. क्लियर? आगे बढ़े यहाँ तक. क्लियर एवरीबडी? PC is equal to what? Net payment to shareholders. Now PC is not equal to NATO in this scenario. And this NATO is what? Excluding goodwill. मतलब ये जो net asset taken over calculate करूंगा उसमें goodwill नहीं लेना है. क्यों नहीं लेना है? I'll give you one example. सम्राट को टेक ओवर किया, लमसम अमाउंट डिसाइड हो गया, वी विल पे यू 10 करोड़. करेक्ट, वी विल पे यू 10 करोड़ रुपीज. उसने बोला ओके 10 करोड़ में फाइनल. फिर हमने उसके पास से सब लिस्ट मांगा एसेट्स लाइबिलिटीज का. तो पता चला 8 करोड़ के टेंजिबल एसेट्स हैं, 2 करोड़ का लाइबिलिटी है, 6 करोड़ का नेट एसेट टेकन ओवर है टेंजिबल. करेक्ट, 6 करोड़ का नाटो है, 6 करोड़. और मैंने पे कितना किया? 10 करोड़ पे कर दिया. तो ज्यादा पे किया कि कम पे किया? ज्यादा पे किया. दैट एक्सेस पेमेंट इज फॉर व्हाट? गुडविल. whenever you are paying extra amount, that extra amount is for goodwill. याद रखो. करेक्ट. इसमें 2 ब्रांच आएगा. PCs मोर देन नाटो. अगर पेमेंट ज्यादा किया तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है? पेमेंट ज्यादा किया, PC इज मोर, मतलब पेमेंट इज मोर, पेमेंट ज्यादा हुआ, तो ये प्रॉफिट के लॉस? बोलो. लॉस है. एंड इट इज विच लॉस? इट इज विच लॉस? इट इज कैपिटल लॉस. रोज होता है ये. This loss is arising from extraordinary transaction. So this is capital loss, and that capital loss will be debited in what? Goodwill. This will be considered as goodwill. And ये goodwill को हम क्या बोलते हैं मालूम है? Excess payment made. जहाँ पे भी ज़्यादा पे किया, that is for goodwill. दूसरा क्या है? PC इज लेस देन नाटो. हम 10 करोड़ पे करके आ गए. फिर हमने कैलकुलेट किया तो एसेट आया 15 करोड़ का, लायबिलिटी आया 2 करोड़ का. सो 15 करोड़ माइनस 2 करोड़, इट विल बी 13 करोड़. सो एक्चुअली नेट एसेट टेकन ओवर 13 करोड़ का है. बिजनेस 13 करोड़ का था, हमने 10 करोड़ पे कर दिया सिर्फ. करेक्ट, क्योंकि उसको पैसे का बहुत ज़रूरत था तो हमने कम पेमेंट किया. ही अग्रीड. ये क्या आया बोलो? ये क्या बोलेंगे? इसको प्रॉफिट बोलेंगे कि लॉस बोलेंगे? इट इज विच प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट. एंड कैपिटल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. बोलो. PC क्लियर? प्रॉब्लम किधर आएगा मालूम है सर? विवेक, हमको यही समझता नहीं है ये नेट पेमेंट मेथड है कि नेट एसेट मेथड है. प्रॉब्लम ही उधर आएगा. अब बोलेगा क्या फर्क पड़ता है? अरे पेमेंट रहेगा तो पहले पेमेंट का टेबल बनेगा, बाद में नाटो बनेगा, फिर डिफरेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा. एसेट मेथड रहेगा तो सिर्फ नेट एसेट टेकन ओवर कैलकुलेट करो, नाटो आ गया, दैट इज योर PC, एंड फिर पेमेंट करो, बाद में पेमेंट टेबल बनेगा. तो पहले नाटो करने का है कि पहले पेमेंट करने का है? दैट इज डिपेंडिंग ऑन दिस मेथड्स, एंड यू शुड नो हाउ टू आइडेंटिफाई द मेथड. यहाँ तक क्लियर एवरीबॉडी? ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई. एक ट्रिक बताओ क्या, कैसे फाइंड करेंगे हम? या इधर लिख लो. एक पॉइंट लिखो. इफ full information about
how much to pay is given in the question, then it is net payment method. नेट पेमेंट मतलब हाउ मच टू पे, कितना पे करना है उसका फुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो पेमेंट मेथड, अदरवाइज make payment on net asset basis. Then it is net asset method. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. समझा यहां तक? क्लियर? क्या कंप्लीट किया? परचेज कंसिडरेशन. एक बार रिवाइज कर लो, पीसी कंप्लीट हो गया. चलो, तो ये हुआ पीसी. अभी आगे बढ़ते हैं. सेकेंड रिक्वायर्ड पार्ट बोलो क्या है? अकाउंटिंग. Accounting in the books of selling. सेलिंग कंपनी का अकाउंटिंग कैसे करें? It is not standard based accounting. It is objective based accounting. Objective मतलब ये सेलिंग कंपनी को करना क्या है? बंद करना है सेलिंग कंपनी. वी हैव टू लिक्विडेट दिस सेलिंग कंपनी. लिक्विडेशन का अकाउंटिंग सीखेंगे. हाउ टू क्लोज डाउन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी. अग्रीड? इट इज नॉट, लिखो इधर, इट इज नॉट स्टैंडर्ड बेस्ड अकाउंटिंग, इट इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड अकाउंटिंग. Next line. The objective of selling companies' books is liquidation. ब्रैकेट में closing down the books, closing down the company and its books. Correct? Next line. अभी you should rectify this. ये बाहर करना पड़ेगा सर. Next line.
following ledger accounts are to be opened to close the books of selling company. ये समझा क्या? सेलिंग कंपनी का बुक्स क्लोज करने के लिए ये लेक्चर अकाउंट ओपन करना. विच लेक्चर वी विल ओपन? बोलो. सेलिंग कंपनी के लिए कौन से लेक्चर ओपन करेंगे? दे. Yes, Aryan, any opinion? Navya? चलो. I hope आप बचपन में कुछ एक चैप्टर सिखा रहेगा डिसॉल्यूशन. करेक्ट. There we have closed down the books of partnership form. Here we have to close down the books of limited company. So which account will be opened? Realization. So we will open realization account. Correct. Second, बोलो उधर क्या था? But now we will not have partners. We will have what? So open equity shareholders account. Then preference shareholders account. So realization account, equity shareholders, preference shareholders account, और क्या था बोलो उधर? कैश बैंक अकाउंट. Then we have purchasing company account. Correct. And इसके बाद we will have क्या लिखा? क्या क्या पे करेंगे? परचेसिंग कंपनी क्या क्या पे कर सकते हैं? डन. यहाँ तक क्लियर. क्वेश्चन में क्या बोलेंगे मालूम है? प्रिपेयर नेसेसरी लेक्चर का. तो यू शुड नो विच लेक्चर यू हैव टू ओपन. इसीलिए ये सब बायट होना चाहिए. कौन सा लेक्चर ओपन करना है? तो लाइक रियलाइजेशन 3/4 पेज के लिए रहेगा. बाकी सब 5-6 लाइन्स का अकाउंट ओपन करना है. मैनेजेबल. डन. अभी सेलिंग कंपनी के बुक में कौन से लेक्चर ओपन करने वो हमने सीख लिया.
अभी सेलिंग कंपनी के बुक में अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो कुछ स्टेप्स फॉलो करें. ये स्टेप्स बाय ऐड करना. अभी के अभी वी हैव 1 आवर. ये स्टेप्स भी हो जाएंगे. स्टेप्स तो अभी कर लेंगे 15 मिनट. देन वी मे गो फॉर द क्वेश्चन. करेक्ट. स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप. ओके, बाय द वे क्वेश्चन में क्या दिया है? तो सेलिंग कंपनीज बैलेंस शीट वुड बी गिवन. along with that few information would be given. करेक्ट. जो डिसोल्यूशन में हुआ करता था वैसे ही. स्टेप नंबर 1 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांसफर what? All assets and liabilities. Transfer all assets and liabilities, ब्रैकेट में लिखो बैलेंस शीट आइटम्स, टू द respective ledger accounts. At their book value. At their book value. Meaning, अपनी भाषा में, empty the balance sheet. As a student, you should remember this. बैलेंस शीट खाली करना है. empty the balance. समझा कि नहीं समझा? चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल किधर जाए? ये रिस्पेक्टिव लेक्चर मतलब यही लेक्चर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में जाएंगे. बराबर है. विच साइड? विच साइड? डेबिट साइड कि क्रेडिट साइड? बैलेंस ब्रॉट डाउन अग्री. साइड होता है ना सर, टू के बाय होता है ना सर. लेक्चर में एक ही साइड थोड़ी होता है. क्रेडिट साइड. ओके, क्या लिखेंगे? बाय इक्विटी शेयर कैपिटल will be transferred to equity shareholder account. So by balance side, by balance के by equity share capital, by equity share capital account. ये कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं कि होल्डर अकाउंट बना रहे हैं? होल्डर अकाउंट बना रहे हैं. कैपिटल अकाउंट रहता तो ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस लिख देते. It is not capital account, it is holder account. What is payable to holder? So capital is payable to holder. So transfer that equity share capital to equity shareholder account. Correct? तो बाय क्या लिखा? एंट्री क्या बना? इक्विटी शेयर कैपिटल टू, मीनिंग इंटरप्रिटेशन.
कैपिटल डेबिट किया मतलब कैपिटल क्या किया, कैंसल कर दिया, अकाउंट क्लोज कर दिया, एंड इट इज ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। क्यों क्लोज किया? क्योंकि बिजनेस क्लोज हो रहा है, सेलिंग कंपनी का बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो सेलिंग कंपनी के सारे अकाउंट क्लोज करने हैं, ट्रांसफर करो रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्लोज किया, इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर। क्या वैल्यू पे? क्या वैल्यू पे? बुक वैल्यू। एम्प्टी द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू रहेगा वही वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे। अब बोलेगा सर बैलेंस लिखे के इक्विटी शेयर कैपिटल लिखे क्या फर्क पड़ता है? जर्नल पूछेगा तो क्या करें? बाय बैलेंस लिखा तो जर्नल नहीं आएगा, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा तो एंट्री बनता है इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। एंड बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर होल्डर करके कुछ नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल करके। डन। चलो सेकेंड आइटम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किधर जाएगा? विच साइड? क्रेडिट साइड। लायबिलिटी के सारे आइटम्स क्रेडिट में जाएंगे। एंट्री बोलो, वो इफेक्ट हुआ, एंट्री बोलो। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। कैपिटल डेबिट क्यों किया? कैपिटल कैंसिल किया, एंड होल्डर क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज इट इज पेएबल टू होल्डर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स किसके होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर के होते हैं ना, बराबर। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। विच साइड? क्रेडिट साइड। इट इज पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। एंट्री बोलो। यस, रिजर्व्स एंड सरप्लस डेबिट क्यों किया? क्योंकि कैंसिल किया, वो अकाउंट क्लोज किया, एंड ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर। करें? चलो वेरी गुड। आगे डिबेंचर्स। डिबेंचर्स अकाउंट बनाया है तो किधर जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। जिसका अकाउंट नहीं है वो सब किधर जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। सो डिबेंचर विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। एंट्री बोलो। ओके, रियलाइजेशन में कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट बाय डिबेंचर आएगा ना। एंट्री क्या बना? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब डिबेंचर अकाउंट क्लोज किया, रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया। क्यों ट्रांसफर किया रियलाइजेशन में? ये लायबिलिटी को मैं रियलाइजेशन में क्यों डाला? उधर से परचेसिंग कंपनी टेक ओवर करके लेके जाएगा, या फिर वो टेक ओवर नहीं करेगा तो हम पे कर देंगे, तो हम वो अकाउंट से पे कर देंगे। क्लियर? पक्का? चलो आगे। क्रेडिटर्स किधर ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन। विच साइड? क्रेडिट साइड। क्या वैल्यू पे? ये सब बुक वैल्यू पे। स्टेप 1 पूरा बुक वैल्यू पे है, रिवाइज्ड वैल्यू देखना ही नहीं। इसीलिए तकलीफ होता है सर कौन सा वैल्यू लेने का, तो रिवाइज्ड वैल्यू स्टेप 1 में लेना ही नहीं। अग्रीड? रिवाइज्ड वैल्यू किधर लेंगे? वो नेट तो कैलकुलेट करेंगे ना, उसमें लेंगे, बाकी सब बुक वैल्यू। डू यू अग्री? चलो उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स। विच साइड? एंट्री। फिक्स्ड एसेट क्रेडिट क्यों किया? क्लोज करने के लिए, अकाउंट क्लोज करना है, क्रेडिट किया और रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। फिर रियलाइजेशन से या तो हम बेच देंगे या परचेसिंग कंपनी लेके जाएंगे। समझा कि नहीं समझा? व्हाट अबाउट गुडविल? बैलेंस शीट में गुडविल दी है। गुडविल का क्या करते? सेल्फ जनरेटेड तो लिख ही नहीं सकते हम बैलेंस शीट में। somebody had taught you in ES 26। पास्ट में हमने कोई बिजनेस खरीदा रहेगा सेलिंग कंपनी, तो उसका गुडविल दिखता रहेगा ना।
अभी वो गुडविल का अभी क्या करूं, कंपनी बंद कर रहा हूं। यस नव्या, व्हाट इज योर ओपिनियन? See, clearly answer is given here. Transfer what? All assets and liabilities to respective ledger account. मतलब गुडविल भी ट्रांसफर होगा। अभी किधर ट्रांसफर होगा, उसका सेपरेट अकाउंट है क्या? नहीं है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर होगा। क्या वैल्यू पे? क्लियर? चलो उसके बाद डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, ये सब किधर जाएगा? रियलाइजेशन। कैश बैंक नहीं, उसका एक रूल है, इफ इट इज टेकन ओवर तो उसको रियलाइजेशन में रखना है। इफ इट इज नॉट टेकन ओवर तो कैश बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखना है। इसका कैसे याद रहेगा? इफ इट इज नॉट टेकन ओवर मीन्स इट शुड बी पेड फॉर सर्टन पर्पस और अल्टीमेटली इट वुड बी गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इफ इट इज नॉट टेकन ओवर तो उसको कैश बैंक में रखो, कोई पर्पस के लिए यूज करो या इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट में दे देना। बट टेक ओवर हो गया है तो कैश बैंक में रख के क्या करूं, अदरवाइज वो इक्विटी शेयर होल्डर को चले जाएगा। क्लियर? चलो यहां तक कोई डाउट? मैनेजेबल? विच स्टेप इज ओवर? स्टेप नंबर 1, एम्प्टी द, थोड़ा समझा। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का क्या करेंगे? फिक्टिशियस एसेट सुना है आपने? फिक्टिशियस एसेट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अगर कुछ रहेगा, पीएनएल डेबिट बैलेंस रहेगा, क्या करना है? दे आर कॉल्ड एज नेगेटिव रिजर्व्स। क्या बोलते हैं उनको? नेगेटिव रिजर्व्स। नेगेटिव रिजर्व्स हम कहाँ लिखते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के डेबिट से। क्लियर? Number 2, step number 1 is over. I hope you understood first. Step 2, क्या लिखा? PC due, purchase consideration due, and PC received. हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं? सेलिंग कंपनी। सो PC due and PC received. बोलो PC ड्यू का एंट्री क्या है? ड्यू मतलब रिसीवेबल। नो, वी आर सेलिंग कंपनी। PC ड्यू मतलब रिसीवेबल, किसके पास से? तो परचेसिंग कंपनी विल बिकम अवर डेटर बिकॉज मनी इज रिसीवेबल फ्रॉम परचेसिंग कंपनी। तो एंट्री क्या बनेगा PC ड्यू का? परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट। टू, रियलाइजेशन अकाउंट। परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर? पक्का? बाय रियलाइजेशन क्रेडिट, ऐसा सुना है? एसेट सेल किया, एंट्री क्या आता है? कैश बैंक टू रियलाइजेशन। एसेट कोई पार्टनर लेके गया तो पार्टनर्स टू रियलाइज, कैपिटल टू रियलाइजेशन। यहाँ पे परचेसिंग कंपनी लेके जा रहा है तो परचेसिंग कंपनी टू रियलाइजेशन। अग्रीड? ओके। एंड PC रिसीव्ड,
एंट्री बोलो. What is received? मतलब क्या मिलेगा? Why cash time? Any mode, no? पीसी तो कोई भी मोड में मिल सकता है. तो मोड्स ऑफ पेमेंट अकाउंट डेबिट मतलब इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी, प्रेफरेंस शेयर इन परचेसिंग कंपनी, कैश बैंक, ये सब अकाउंट बनाया ना जो हमने, सब डेबिट होंगे. क्लियर. ये स्टेज पे क्या होगा, एक नोट लिखो. एट दिस स्टेज purchasing company account will get closed. Do you agree with this statement? अरे ड्यू किया मतलब रिसीवेबल था, जितना लेने का था उतना हमने सेकेंड एंट्री में ले लिया. तो ये स्टेज पे क्या होगा, अरे उधर क्यों लिया, इसके बाद रिसीव होने के बाद टैली होगा. मैंने बाजू बाजू में लिखा है ना बेटा, सिर्फ ड्यू के बाद टैली नहीं होगा. पीसी ड्यू किया फिर पीसी रिसीव कर दिया तो परचेसिंग कंपनी क्लोज हो जाएगा. At this stage, purchasing company account will get closed. Do you agree? Yeah, we are done with number 2. Any doubt in this, guys? दो स्टेप क्लियर. क्या था स्टेप 1? ने अपनी अपनी भाषा में एम्प्टी द बैलेंस. क्या वैल्यू पे? बुक वैल्यू. जो वैल्यू बैलेंस शीट में रहेगा वही वैल्यू. बैलेंस शीट खाली करने का. स्टेप 2, पीसी ड्यू एंड पीसी रिसीव. ड्यू मीन्स रिसीवेबल किसके पास? यहाँ मैं यहाँ पे हूँ. नहीं बारिश आने दो. इधर देख के बोलना, उधर देख के बोल रही है. कौन है क्या मालूम. इधर पीसी ड्यू. ड्यू मतलब रिसीवेबल किसके पास से? तो परचेसिंग कंपनी विल बिकम अवर एंट्री. परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. फिर पीसी रिसीव, जो भी मिलेगा उसको डेबिट. मोड्स ऑफ पेमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसिंग कंपनी. ये कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा. क्वेश्चन में पीसी कैलकुलेट करने का इन्फो रहेगा. देन वी हैव टू डिसाइड कि अभी कौन सा एंट्री करूं, कौन सा एंट्री करूं, कौन सा एंट्री करूं. इसीलिए स्टेप्स में ऐड करने पड़े. अग्रीड? चलो आगे बढ़ते हैं. फाइनल अकाउंट किया, उसमें कैसा था, एक एक एडजस्टमेंट करते गए सीक्वेंस में, दो दो इफेक्ट देते गए, हो गया. इधर ऐसा नहीं रहेगा. हियर वी हैव टू रीड एंटायर प्रॉब्लम, देन वी हैव टू डिसाइड पीसी का कौन सा मेथड है, देन पीसी कैलकुलेट करो. उसके बाद में रिक्वायर्ड पार्ट में सेलिंग कंपनी का लेजर पूछा है तो लेजर बनाओ, और उसके बाद में ये स्टेप्स फॉलो करो. थियरी बड़ा इसीलिए ही है, अभी तो परचेसिंग कंपनी चालू नहीं हुआ है, सेलिंग कंपनी. इसके लिए थियरी बाय हार्ट करो. थियरी बाय हार्ट हो गया तो चैप्टर मस्का हो जाएगा, मजा आ जाएगा. करेक्ट. एंड आई वुड अप्रिशिएट इफ यू विल कम ऑफलाइन लाइक यू ऑल केम टुडे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. एनीवेज यहाँ पे रहेंगे तो कैसा है, थोड़ा बाय हार्ट हो जाएगा. स्टेप नंबर 3. नाउ व्हाट इज स्टेप नंबर 3? रियलाइजेशन और realization or liquidation expenses paid by selling company.
कौन पे करेगा? एक मिनट, कौन पे करेगा? हाँ, दोनों पे कर सकते। हमारा डील परचेसिंग कंपनी के साथ ऐसे ही हुआ है कि परचेसिंग कंपनी को हमने बोला यू पे ऑन माय, तो परचेसिंग कंपनी मे पे, करेक्ट, सेलिंग कंपनी में, या कुछ कट ऑफ भी हो सकता है, आउट ऑफ 10,000 8,000 परचेसिंग कंपनी, 2,000 सेलिंग कंपनी। तो अपना रूल बहुत सिंपल है, जो पे करेगा उसके बुक में एंट्री करेगा, जो पे करेगा उसके बुक में एंट्री करेगा, करेक्ट। एंट्री बोलो, सेलिंग कंपनी क्या एंट्री करेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो क्या ये एंट्री तो सिंपल है ना एवरीबॉडी। रियलाइजेशन किसके बुक में बनी? ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे परचेसिंग ओपन करूंगा ना सब कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। ये क्लियर? नंबर 4, disposal of assets and liabilities which are not taken over by purchasing company. पॉसिबल? इस सम्राट है वो बोलेगा ये एक एसी है ना, हम आपको नहीं देना चाहते हैं, ये एसी हम खुद हमारे घर पे रखेंगे या हम खुद बेचेंगे। तो ये एसी का क्या करेगा? विच इज नॉट टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी, या परचेसिंग कंपनी बोलता है वी विल नॉट टेक ओवर दीज एसीज, दीज आर टू ओल्ड। पॉसिबल? व्हाट सेलिंग कंपनी विल डू इन दैट सिनेरियो? सोचो प्रैक्टिकली, बहुत सिंपल है। सम्राट को टेक ओवर कर रहे हैं, हम बोलेंगे आपका एसी बहुत पुराना है, हमको ये एसी नहीं चाहिए, वी विल नॉट टेक ओवर, तो उसको नाटो में नहीं डालना। फेयर इनफ? हाँ, अभी नाटो में नहीं डालेगा तो क्या करेंगे? हाँ, प्रोपराइटर रहेगा तो ओनर लेके जाएंगे, शेयर होल्डर तो लेके नहीं जा सकते, करेक्ट। तो क्या करेंगे? डिस्पोज करेंगे। तो डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। हमने बोला आपका बैंक लोन है, मैं मेरे को नहीं चाहिए ये एक्सिस बैंक लोन आपका 2 करोड़ का, आप खुद पे करो, तो मैंने उसका लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं किया, तो वो विल डिस्पोज ऑफ दैट, सेलिंग कंपनी इटसेल्फ विल डिस्पोज। तो सेलिंग कंपनी में स्टेप 4 में आएगा। क्लियर? चलो, एसेट डिस्पोज करेगा तो एंट्री क्या है? बोलो एंट्री। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, नो, एसेट को तो रियलाइजेशन में डाल के रखा है, स्टेप 1 में ही तो डाला ना, सारे एसेट्स ट्रांसफर है रियलाइजेशन में, कैश बैंक टू रियलाइजेशन एंड बरोबर है, बोलो।
हाँ, कितने स्टेप्स? 4 हो गए. 1 2 3 4 याद रहेगा. व्हाट इज 1? एट बुक वैल्यू याद रखना. सेकेंड, पीसी ड्यू एंड पीसी रिसीव. ड्यू मीन्स किसके पास से? एंट्री टू रियलाइजेशन. Then PC received, modes of payment account debit to purchasing company. At this stage, purchasing company will get settled, closed. Agreed? Step 3, realization expense paid by selling company. Entry to cash or bank. Agreed? Okay. Step 4, disposal of assets and liabilities which are not taken over by purchasing company. Entry cash bank account debit to realization and realization to cash bank. Clear है? Number 5, I can say पेमेंट. अभी 4 स्टेप हो गया ना, 4. उसके बाद ओनर को पे करना. हम कौन है? सेलिंग कंपनी. जिसके बुक में है वो हमें. वी विल मेक पेमेंट टू ओनर्स. ओनर्स में पहले किसको पे करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर. डायरेक्ट इक्विटी को फिर खत्म हो गया स्टोरी. सो पेमेंट टू एंट्री. प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू नहीं. मोड ऑफ पेमेंट क्या? तो परचेसिंग कंपनी ने इधर मोड्स पे कर ही दिया ना बेटा. ये क्या आया आपके पास? पीसी रिसीव किया उसने. आपने तो रिसीव कर लिया मोड्स ऑफ पेमेंट. और ये मोड्स ऑफ पेमेंट किसके लिए है? कौन से शेयर होल्डर? कौन से? इक्विटी के प्रेफरेंस के? दोनों. दोनों के लिए है ना. सो मोड्स ऑफ पेमेंट इज ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम परचेसिंग कंपनी. नाउ इन स्टेप नंबर 5 वी विल मेक पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. सो वी विल पे दैट मोड. सो टू व्हाट? मोड ऑफ पेमेंट. इट कैन बी एनी मोड which would be given in the question. Done? अभी बोलो, ये पेमेंट करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लोज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना. अगर बैलेंस आया तो क्या करेंगे? ये स्टेज पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया तो क्लोज होना चाहिए. बट इफ एक्सेस पेमेंट में या डेफिसिट पेमेंट में, दैट इट मींस दैट डिफरेंस विल कम ना. तो डिफरेंस किधर जाएगा? सुनो, आप जो बोल रहे हो ना, आई विल रेक्टिफाई. ये मिस्टेक नहीं करना. परचेस कंसिडरेशन इज फ्रॉम परचेसिंग कंपनी पॉइंट ऑफ. परचेस कंसिडरेशन इज गिवन इन AS14. तो AS14 में दिया है तो परचेसिंग कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज AS14 पूरा परचेसिंग कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू. इसको गुडविल और कैपिटल रिजर्व करके क्या फायदा? इधर तो गुडविल कैपिटल रिजर्व सेलिंग कंपनी के बुक में कभी नहीं दिखेगा. ये कंपनी बंद कर रहा हूं मैं. गुडविल और कैपिटल रिजर्व किसके बुक में दिखने वाला है? परचेसिंग कंपनी के बुक में. ये क्लियर? डिफरेंस इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एज प्रॉफिट और लॉस. किधर ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन. करेक्ट. लिखो. At this stage, if preference shareholder account doesn't tally, then difference should be transferred
should be transferred to realization account. क्लियर? कौन सा स्टेप होगा? स्टेप नंबर 6. अभी क्या करेंगे बोलो? नहीं, रियलाइजेशन पहले क्लोज करेंगे एंड ट्रांसफर प्रॉफिट और लॉस टू, बोलो, इक्विटी शेयर होल्डर का, ओनर को देंगे ना. यहाँ तक समझा एवरीबडी? एंड स्टेप 7 बोलो क्या रहेगा अभी? कम ऑन. मेक फाइनल पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट मस्ट टाइम इन अदर वर्ड्स. क्या किया मालूम है लास्ट में? ये स्टेप 5 के बाद क्या करने का मालूम है? ये एज अ स्टूडेंट यू शुड रिमेंबर. स्टेप 5 हो गया ना, मतलब सब अकाउंट क्लोज करो, इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करो, तो इक्विटी शेयर होल्डर टैली हो जाएगा. आफ्टर स्टेप 5 ट्रांसफर ऑल बैलेंसेस टू इक्विटी शेयर होल्डर विल टैली. बट जर्नल रहेगा तो ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज फंसेंगे उसमें, क्योंकि एक एक अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा. क्लियर? डन? किसका बुक हुआ है? सेलिंग कंपनी का बुक हुआ. अभी कि परचेसिंग कंपनी का अकाउंटिंग कैसे करेंगे बेटा? स्टैंडर्ड बेस्ड अकाउंटिंग. एस 14 में दिया स्टैंडर्ड बेस्ड अकाउंट. पीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड बेस्ड कैलकुलेशंस है. सेलिंग कंपनी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? ऑब्जेक्टिव बेस्ड अकाउंटिंग. यहां तक समझा क्या स्कॉलर्स? समझा? आगे बढ़ो. अभी परचेसिंग कंपनी का अकाउंटिंग कैसे करें? एग्जाम में क्या पॉपुलर है? एग्जाम में पीसी कैलकुलेशन एंड ये परचेसिंग कंपनी पॉपुलर है. परचेसिंग कंपनी में भी जर्नल एंड बैलेंस शीट दो चीज पूछते हैं. मैक्सिमम टाइम दे आर आस्किंग व्हाट यू नो, बैलेंस शीट. इसका बैलेंस शीट, आफ्टर अमालगमेशन बैलेंस शीट, आफ्टर एब्सॉर्प्शन बैलेंस शीट. डायरेक्ट बैलेंस शीट बना नहीं पाएंगे, उसके लिए जर्नल आना चाहिए. करेक्ट? सो परचेसिंग कंपनी में क्या रहेगा? दो पार्ट. फर्स्ट वी हैव टू लर्न जर्नल एंट्रीज. अभी कितने एंट्रीज?
बहुत सारे एंट्रीज हैं। नेहा आई थिंक सो, हाँ नेहा ऑनलाइन है, साहिल नहीं आ रहा है, आता है कि नहीं आता है? क्योंकि अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसको प्लीज़ ये रिवाइज करके आने बोलो, आपसे बात होएगा ना साहिल का तो बोल दो। एनीवेज आगे बढ़े। अभी जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट, ये दो चीज करना है। जर्नल में है ना, मैंने एंट्रीज को कैसे डिवाइड किया ये अगेन क्वेश्चन पढ़ के समझेगा नहीं किसका एंट्री करना। क्वेश्चन पढ़ के कुछ नहीं समझता है, क्वेश्चन में कुछ इतना दिया भी नहीं रहता। वी हैव टू डू अकाउंटिंग, ये सब रिकलेक्ट करने का खुद के हिसाब से अकाउंटिंग करते रहे। ये जर्नल भी खुद का जैसे पढ़ेंगे वैसे करते रहेंगे। तो वी हैव टू डिसाइड समथिंग, करेक्ट। थियरी रट्टा मारने का तो सब हो जाएगा। मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया जर्नल को, आई वुड से 4 पार्ट्स। पहले 3 बेसिक एंट्रीज आए, 3 बेसिक एंट्रीज, मतलब ये 3 एंट्री हर सम में आएंगे, करेक्ट। 2 एडिशनल एंट्रीज which may or may not be there in all the questions, 5 special transactions 10 हुए which may or may not be there in all the questions, and then sundry transactions जो कुछ एडिशनल रहेगा क्वेश्चन में तो देखते हैं एंट्री पास करेंगे, करेक्ट। सो आई वुड से वो 10 जर्नल एंट्रीज के लिए यू शुड नो द सीक्वेंस। आज 10 नहीं करेंगे, एटलीस्ट पहला 3 बेसिक पे तो बात कर सकते हो, करेक्ट। सो अवर फर्स्ट पार्ट वुड बी बेसिक जर्नल एंट्री। पार्ट 1 बेसिक एंट्रीज। कितने बेसिक है? 3। फर्स्ट, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? क्या लिखा? या फिर बस परचेज, मतलब बिजनेस परचेज। ये जो हेडिंग लिखवा रहा हूं ना, ये सब आपके नरेशन है। क्लियर? पीसीडी एंट्री रिसीवेबल के पेज किसको? सेलिंग कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन, उसको कैसे दे? कोई इंसान चाहिए ना। एक एक शेयर होल्डर को बुला के पेमेंट करेंगे तो एक कोई पर्सन अपॉइंट होगा ना। कंपनी सेलिंग कंपनी को लिक्विडेट करना है, उसके लिए एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे, उसको बोलते हैं लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर को हम पे करें। एंट्री क्या बनता है बोलो? business purchase account debit to liquidators of selling company account।
लिक्विडेटर को क्यों क्रेडिट किया? पेएबल। बिजनेस परचेज is just a dummy account open. In other words, this entry is just a dummy entry. It will get cancelled in corresponding entries. It will not come in balance sheet. Clear? First basic entry clear, everybody? No? Second basic entry. Second basic entry. PC paid or discharge. Entry बोलो। इसको पे करेंगे liquidators of selling company. To what? Come on. Perfect. क्या पे करेंगे? मोड में क्या क्या रहेगा? शेयर्स क्या भाव पे रहेंगे? शेयर्स मतलब शेयर इश्यू प्राइस पे रहेंगे, बट शेयर अकाउंट में कितना जाएगा? फेस वैल्यू। अरे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आएगा ना। परचेसिंग कंपनी है, मैं इक्विटी शेयर इश्यू कर रहा है, मैं डिबेंचर इश्यू कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहा है। बैलेंस शीट लायबिलिटी में इट विल कम ऑलवेज एट फेस वैल्यू इफ दे आर फुल्ली पेड, and if they are issued at more than face value then securities premium will come. Agree? Yeah? चलो यहाँ तक क्लियर एवरीबडी? थर्ड एंट्री देखो, एक मिनट, लिक्विडेटर कैंसिल हो गया, चेक इधर, इधर क्रेडिट इधर डेबिट। अभी ये बिजनेस परचेस कैंसिल होएगा। देखो मैं कौन सा एंट्री कर रहा है, थोड़ा जल्दी चेक करो। नाटो, नाटो का एंट्री का है। आप लोग क्या बोलते हैं इसको? नीटो और समलक, इंग्लिश इतना आता नहीं। हम लोग ऐसा बचपन से इसको नाटो बोलते हैं, हमारे लिए ए आया तो आ होता है। एनीवे चलो, सो नेट एसेट टेकन ओवर विल बी अवर थर्ड ट्रांजैक्शन। नेट एसेट टेकन ओवर थिंग फ्रॉम परचेसिंग कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। परचेसिंग कंपनी विल रिकॉर्ड मतलब ये पीसी, ये नाटो रिकॉर्ड करना है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर करके बुक में रिकॉर्ड करना है। एंट्री क्या आएगा? ये क्या आएगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट। अग्री? क्या वैल्यू पे? रिवाइज्ड वैल्यू पे आएंगे। इसमें गुडविल आएगा कि नहीं आएगा? डिपेंड्स। नेट एसेट मेथड रहेगा तो गुडविल इमीडिएटली डेबिट करूंगा। नेट पेमेंट रहेगा तो बैलेंसिंग फिगर ये एंट्री में गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा। नेट पेमेंट मेथड है पीसी का तो इधर कैपिटल रिजर्व भी आ सकता है, बट नेट एसेट मेथड है तो गुडविल एसेट में इंक्लूड रहेगा, तो मैं गुडविल डेबिट कर देगा। डू यू अग्री विद दिस? वेरी गुड। एसेट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कम ऑन। लायबिलिटीज क्रेडिट करेंगे ना, टू व्हाट? बिजनेस। क्या तक क्लियर? तीन बेसिक याद रहेगा, हर सब में आएगा।
और इसका नेट इफेक्ट क्या आया? नेट फर्स्ट एंट्री तो कैंसिल हो गया, एसेट डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, टू मोड्स ऑफ पेमेंट, तो एसेट लाइबिलिटी लिया और पेमेंट किया, वही तो नेट इफेक्ट रहता है। करेक्ट। पार्ट 2 भी कर देता हूं, वी हैव 10 मिनट्स, आई विल नॉट गो फॉर द क्वेश्चन। करेक्ट। पार्ट 1 क्या था? बेसिक एंट्री। किसका बुक है ये? बोलते रहेंगे तो याद रहेगा। सी, रिविजन इज द की इन दिस चैप्टर। आगे बढ़े। बेसिक एंट्रीज डन, बेसिक एंट्रीज डन। अभी क्या नाम दिया बेटा? एडिशनल एंट्रीज। दो एडिशनल एंट्रीज। फर्स्ट मतलब आई विल राइट फोर्थ, discharge of outsiders liabilities of discharge of outsiders liabilities of selling company। अभी बोलो एंट्री क्या है? नॉर्मली इसमें क्या रहेगा मालूम है? नॉर्मली डिबेंचर्स। ये नाटो का एंट्री पास किया ना, थर्ड, थर्ड एंट्री में बोलो लाइबिलिटी में क्या क्या लेके आए रहेंगे? डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब नॉन करंट प्लस करंट लाइबिलिटी दोनों लेके आए रहेंगे। उसमें क्रेडिटर लेके आए तो प्रॉब्लम नहीं है, बुक में रख सकता हूँ। बिल्स पेबल लेके आए, बुक में रख सकता हूँ। डिबेंचर लेके आए, अब ये डिबेंचर जो लेके आए हैं वो सेलिंग कंपनी के डिबेंचर्स हैं, सारे 7% सेलिंग कंपनी के डिबेंचर रहेंगे, तो वो मैं मेरे बुक में लेके आया। अभी मेरे को वो डिबेंचर कैंसिल करके नया डिबेंचर इशू करना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर को। न्यू सर्टिफिकेट शुड बी गिवन मे बी ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट, 7% का 7.5, 8, यू नेवर नो व्हाट बार्गेनिंग दे हैव डन। तो नया डिबेंचर इशू करेंगे तो एंट्री क्या आएगा? तो ओल्ड लाइबिलिटी जो लेके आए हैं उसको मैं पे कर रहा हूं, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इट कैन बी एनी मोड। जैसे पे करेंगे वो क्रेडिट कर। समझा? पक्का? वहां पे भी स्टेप 4 क्या था? सेलिंग कंपनी। स्टेप 4 सेलिंग कंपनी में डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज व्हिच आर नॉट टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी। इधर स्टेप 4 क्या था? मतलब एंट्री 4 क्या है कि जो लाइबिलिटी ली है उसको डिस्चार्ज कर, पे कर। क्लियर? एंड लास्ट फॉर द डेट। liquidation or realization expenses paid by
क्या लिखा? क्लियर? पक्का? क्या एंट्री करें? कैश पॉइंट क्रेडिट होगा, इसमें कोई डाउट? ये तो क्लियर है ना? डेबिट liquidation expense or realization expense of selling company paid by purchasing company. सेलिंग कंपनी खुद पे करेगा तो उसके बुक में आएगा, परचेसिंग पे करेगा तो उसके बुक में आएगा। तो अभी परचेसिंग पे कर रहा है तो उसके बुक में एंट्री करना पड़ेगा। क्या है? कैश बैंक तो क्रेडिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोलो, सोचो तो सही। लिक्विडेशन एक्सपेंस डेबिट करेंगे, फिर वो नॉमिनल अकाउंट है, फिर किधर ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल में। हमारा खर्चा तो है नहीं। एनी ओपिनियन? नव्या? चल, tell me, it is whose liquidation expense but paid by us? We are paying this. Can I say this loss? Can I say it is our loss? This loss is happening because of amalgamation. तो ये amalgamation का loss है. Can I say? Can I say? Can I say whatever expenditure I am paying on behalf of selling company? Can I say it is excess payment made over and above purchase consideration? And excess payment will be debited to which account? Goodwill account. कौन से account में? It is our capital expenditure. It is our capital loss will be debited to goodwill account. एक मिनट, अगर पीसी नाटो का डिफरेंस कैपिटल रिजर्व रहेगा तो कैपिटल रिजर्व में डालने का, गुडविल में नहीं डालना। इन अदर वर्ड्स, गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? It is our capital loss. करेक्ट? क्या कंप्लीट किया? पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3, स्पेशल ट्रांजैक्शंस। इसके लिए 1 पेज चाहिए। 1 पेज छोड़ दो फिर। तो नेक्स्ट लेक्चर वी कैन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। ये स्पेशल ट्रांजैक्शन नेक्स्ट लेक्चर में कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। बट पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर वो करेंगे, नहीं समझेगा नहीं क्या। यहाँ तक क्लियर? एक बार रिवाइज करके जाओ सर फटाफट। There are 3 important areas in this chapter. One is determination of PC, second is selling companies books, and purchasing. Purchase. अभी PC, what do you mean by PC? डिबेंचर होल्डर को पे करेगा तो पीसी में नहीं आएगा, तो कैसे पे करने का? बरोबर। सो फर्स्ट इट विल बी टेकन ओवर इन बुक्स। तो देखो ये नाटो के एंट्री में पहले बुक में आ जाएगा।
और फिर पे करना है तो हम इधर पे कर सकते हैं, करेक्ट, बट इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी. हाउ टू डिटरमाइन पीसी? नेट नेट एसेट मेथड पीसी इज इक्वल टू नाटो, ओके, जो भी है. एंड अंडर नेट पेमेंट मेथड पीसी इज इक्वल टू payment made to shareholders, correct. Under net asset method pc is equal to nato, that nato is including goodwill, बराबर है ना? Yeah, okay. And under net payment method pc may not be equal to nato, that nato is excluding goodwill, because their pc and nato's difference will be goodwill or capital reserve. If pc is more, then because payment is more, excess payment is goodwill, that is capital loss. And if pc is less than capital profit, it is capital reserve. Agree? How to identify the method? So yeah, first we have to check कि पेमेंट का फुल इंफॉर्मेशन है कि नहीं, कितना देना है, हाउ मच टू पे, उसका इन्फो रहेगा तो नेट पेमेंट, अदरवाइज इट इज नेट एसेट, याद रहेगा. अब बोलेगा क्या फर्क पड़ता है, नेट पेमेंट है तो पहले पेमेंट टेबल बनेगा फिर नेट एसेट बनेगा, नेट एसेट है तो पहले नेट एसेट बनेगा फिर पेमेंट बनेगा. तो उधर नेट एसेट मेथड में पहले नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे, वो पीसी मिला फिर पे करेंगे. इधर तो पहले पे करना है तो पेमेंट टेबल पहले करना है. बहुत जन क्या बोलते हैं, दोनों टेबल बना देने का, सर जो इन्फो है डालते जाओ मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है. तो ऊपर फिर क्या लिखने का, पीसी, दैट्स इट. मैं क्या लिखवाएगा, पीसी अंडर नेट एसेट मेथड, पीसी अंडर नेट पेमेंट मेथड, करेक्ट. चलो, इफ यू कांट आइडेंटिफाई डोंट वरी, राइट ओनली परचेज कंसिडरेशन. बी स्मार्ट इनफ इन द एग्जाम. क्लियर? चलो, उसके बाद सेलिंग कंपनी का बुक्स. अभी बोलो, सेलिंग कंपनी के बुक्स, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव. क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी बंद करना है, यस, बुक्स क्लोज करना है, अग्री, इट इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड. अभी कितने कौन से अकाउंट्स बनाएंगे, हाँ कौन से हैं, रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कैश बैंक अकाउंट, परचेसिंग कंपनी एंड मोड्स ऑफ पेमेंट अकाउंट. कैन यू रिमेंबर? या उसके बाद में 7 स्टेप्स. सेलिंग कंपनी के स्टेप्स हैं, परचेसिंग के जर्नल एंट्रीज. सेलिंग के स्टेप 1 empty the balance sheet. Step 2 PC due and PC received. Due means selling company है तो receivable, agree, due का entry. Purchasing company to realization, PC received, करेक्ट. हो गया ये 2 स्टेप. चलो, स्टेप 3 रियलाइजेशन एक्सपेंस और लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड, एंट्री, रियलाइजेशन टू कैश बैंक, याद रहेगा. स्टेप 4 एसेट्स एंड लायबिलिटीज विच आर नॉट टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी, तो एसेट हम डिस्पोज करेंगे, कैश बैंक टू रियलाइजेशन, लायबिलिटीज रहेगा तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक. कितना हुआ, 4. स्टेप 5 पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू मोड्स ऑफ पेमेंट, डिफरेंस आया तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देने का. एंड स्टेप 6 क्लोज रियलाइजेशन, ट्रांसफर प्रॉफिट और लॉस टू इक्विटी शेयर होल्डर. स्टेप 7 मेक फाइनल पेमेंट, इट विल गेट टैली, बराबर. फिर परचेसिंग कंपनी का बुक्स में जर्नल एंड बैलेंस शीट दोनों आएगा. जर्नल में 3 बेसिक, 2 एडिशनल, 5 स्पेशल. 3 बेसिक क्या था, पहले पीसी ड्यू, पीसी ड्यू मतलब बिजनेस परचेस का एंट्री है, बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर. सेकेंड, लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट. थर्ड, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू लिक्विडेटर, मैनेजेबल, सॉरी, टू बिजनेस परचेस अकाउंट. क्लियर? स्टेप, आई कैन से सेकेंड पार्ट, 4th एंट्री, disposal of liabilities, that is discharge of liabilities, outsiders liabilities of selling company. Entry, liability to modes of payment. अरे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये 4. क्या देंगे, 7% डिबेंचर होल्डर आर रेडी टू डिस्चार्ज, ready to discharge at 8% premium by issue of 9% debenture at 10% discount. How to handle this? तो वो सब उधर डिबेंचर वाला पार्ट में आएगा, बहुत कुछ आएगा, करेक्ट. 5th वन,
I can say liquidation expense of selling company paid by us, it is our loss. It is capital loss. It is not revenue loss because it is extraordinary transaction. I hope you remember that. Correct? If it is extraordinary transaction, it will not be debited to P&L. So liquidation expense debit nahi hoga. Correct? It will be debited to capital reserve or goodwill. So it is a capital loss due to amalgamation, hence it will be debited to goodwill or capital reserve. That's it. So ये थियरी बैट होना चाहिए. नेक्स्ट लेक्चर कल है, बैट करके लाओ, उसके बाद वेट कर सकते हो. थैंक यू सो मच. होप टू सी यू अगेन in face-to-face lecture. Thank you. Bye. Take care.